हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं। आप सभी ने वीपीएन एप्स तो यूज किए होंगे, बट क्या कभी आपने वीपीएन क्रोम एक्सटेंशंस यूज किए हैं? तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर आप वीपीएन ऐप यूज करते हो तो पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर सेटअप करके इंस्टॉल करेंगे, एंड देन आप उस ऐप को यूज करके आप अपने पूरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिर चाहे आप कोई भी ऐप यूज करें, चाहे कोई भी वेबसाइट विजिट करें, आप इजीली अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बट वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन डिफरेंट है। इसमें आप उसको आराम से इंस्टॉल करिए और फिर एज सुन एज आप क्रोम यूज करेंगे तब जाके वो वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन एक्टिवेट होगा। और अगर उस पर्टिकुलर क्रोम से आप डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो आप आसानी से अपना आईपी एड्रेस उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए चेंज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस तो पता है, बट क्या वीपीएन क्रोम एक्सटेंशंस बेटर है? इन सम एस्पेक्ट्स यस। इसमें आपको स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीपीएन ऐप डाउनलोड करके फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है, फिर स्टोरेज भी जाएगी, बट इसमें कोई स्टोरेज नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप इवन क्रोम को जस्ट ऑन करते ही आपका वो एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ वीपीएन एप्स आपको उसको ओपन करके अपना वीपीएन ऐप कनेक्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ सर्वर से, फिर जाके आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा। तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया है कि एक वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन और वीपीएन ऐप में डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं आज आपके सामने पूरे 5 बेस्ट वीपीएन क्रोम एक्सटेंशंस की लिस्ट लेके आया हूं, और इसमें मैं एक एक करके इनके यूज केसेस एक्सप्लेन करूंगा और आपको आइडिया दूंगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं, और उनके थोड़े बहुत प्लान्स जो अवेलेबल हैं उस पर हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला है नॉर्ड वीपीएन। तो आपको पहला लिंक जो दिख रहा है वीपीएन प्रॉक्सी एक्सटेंशन फॉर क्रोम, इस पर क्लिक करना है। अब यहां पे जाते ही आप देख सकते हो कि एक्चुअली में वीपीएन एक्सटेंशन होता क्या है। A VPN proxy extension is a lightweight version of a VPN app. VPN extensions keep online spies at bay by encrypting your browser's traffic and changing your IP address. The NordVPN extension also improves your browsing experience with useful features like threat protection, and this features blocks ads and dangerous links. So your browsing is safer with NordVPN extensions. This NordVPN extension is for Chrome, Edge, and Firefox. So you can easily protect your browser traffic from prying eyes, even if the website is not secured. But since you have NordVPN, you are always secured. So, what are the basic steps to get a secure connection with a VPN proxy extension? First is to go on Google Chrome and then get NordVPN. Pick the best plan for your needs and buy a NordVPN subscription. Second, what you need to do is add the NordVPN extension. Go to the Chrome Web Store and add the NordVPN Chrome Proxy extension. Last is just as easy as it gets. Log in to your account and connect to the NordVPN proxy server. That's very easy. So I guess you guys get the idea of that. So let's just see the various VPN, NordVPN extensions available. So there are 3 plans. First is the basic, second is plus, and then last is the complete. The basic provides secure and high speed VPN. And moreover, you can see that it has high speed threat protection, 10 devices secured at once, and but there are threat protection pro features that are available only in plus and complete, like anti-malware protection, advanced browser protection, add and track broker. Basically all of these things are the features offered, so choose wisely which plan you want to go ahead with. Next comes ExpressVPN. So like any other VPN, this VPN also provides you with light version of a VPN app. So it's a best VPN Chrome extension. It enables secure browsing with top speeds, spoof your location in your browser, control the ExpressVPN app from within the Chrome, get a new IP address with servers in 105 countries. It's compatible with Windows, Mac, Linux, and so on. So basically, how to basically connect, guys, right? So what you need to do is just get ExpressVPN, install the app on your computer, and install the VPN Chrome extension. In the extension, we need to choose a VPN server location and click on button
to connect VPN. Next, once connected, you'll be able to go online with enhanced security and privacy. That's very easy, guys, right? So, free VPN extension or not, that's the topic for some other day. But now let's talk about CyberGhost VPN extension. So CyberGhost VPN extension, sometimes the website of this AI does not work, so you need a VPN to access that. But the free version is very amazing. Now let's talk about TunnelBear VPN extension. So as you can see, TunnelBear for Chrome. You just click on that. Now after clicking on this, you will be able to find what features does this actually provide you with. So just wait for a second. Now TunnelBear VPN Chrome Web Store. We click on this. So what all is provided? So basically, you get the reduced ability for websites, advertisers, and ISPs to track your browsing. You get even secure your browser on public Wi-Fi and get around blocked websites. And you get to connect to a lightning fast private network with connections to 20 countries. So as you can see with the descriptions of each Chrome extension, you're able to figure out which one is best for you, right? Now, basically for this also you need to do what? Install and download the Chrome extension, then sign into your account, click on the on button to connect to a server, and voila, you are connected to a Chrome extension. That's easy. Now, last is the PIA VPN Chrome extension. We click on this. And what all is provided with this? You can browse without borders using our global server network. Next, cut out ads, disable trackers, and block web RTC detection. You can protect your webcam and microphone from unauthorized access. That's very easy. Now let's see how to access it. So you can set up PIA VPN for Chrome in 3 steps. Step 1, sign up for private internet access. Step 2, set up the PIA. Step 3 is choose a server and start browsing Chrome. That's very easy. Now to download, you just go over here, download VPN Chrome extension. Now, after that, you'll be headed over here. In every case, you just need to click over here, add to Chrome, and then the extension will be downloaded and you can easily set up that. Hope that this video was quite insightful और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरे वीडियो के ट्यूटोरियल में. अब आगे हम लोग और सीखेंगे कि ऐसी सारी वीडियोस में या फिर अगर आपको और VPNs के बारे में जानना है तो प्लीज टेक टू आवर चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो.